एवरीवन। आज की क्लास में वी विल डिस्कस पेपर 5 मई जून 2022 9701। सो इसका जो हम फर्स्ट वेरिएंट 5.1 हम डिस्कस करेंगे पेपर 5 का। Now these are the instructions you have to follow कि 3 different figures भी देना है, 1 decimal places for angles and degrees. So these are the instructions। ये 50 marks का पेपर है। Now let's see question number 1। Find the number of different arrangements of the 8 letters in the word deceived in which all 3 E's are together and the 2 D's are together. Now the very first thing is that the keyword here is arrangement। अब हमने ये डिस्कस किया था कि अरेंजमेंट जब भी होगा देन वी हैव टू यूज द फैक्टोरियल। ओके, नाउ वी कैन सी हियर दैट अब सबसे पहले तो अच्छा इसके मार्क्स हैं जो अब हम वर्किंग करने वाले हैं, इस वर्किंग के मार्क्स हैं, इसको निगलेक्ट नहीं करना। नाउ दीज आर द क्लियर इंस्ट्रक्शंस दैट इन विच ऑल 3 E's आर टुगेदर एंड द 2 D's आर together। What does it mean? It means कि total we have 8 letters 1 2 3 4 5 6 7 and 8। अब 3 E's are together, so 3 E's are together means these will be the 3 places E, E and E। Then 2 D's are together, 2 D's are together means these two will represent 2 D's। ओके, नाउ अब हम इस जो बॉक्स है इसको हम 1 कंसिडर करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5। नाउ अरेंजमेंट इन 5 की हमने करनी है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल और रिपीटेड लेटर्स कोई भी नहीं बचे बिकॉज ई और डी के अलावा कोई भी रिपीटेड लेटर नहीं है। So this will be 5 factorial only। Now for this box what we have to do कि we have to select दो स्पेसिस है हमारे पास, so 2 factorial और यहाँ पे सिर्फ D ही आ सकते हैं, रिपीटेड लेटर्स 2 factorial ही हैं। Similarly for these 3 E's this will be, अब 3 स्पेसिस हैं, so 3 factorial डिवाइडेड बाय 3 ही E's हैं, तीनों रिपीटेड नंबर्स हैं, सो दैट इज बाय 3 रिपीटेड नंबर्स हैं, तो 3 फैक्टोरियल। नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, जिसका आंसर 1 होगा, सो वी कैन इग्नोर दिस वन। 5 फैक्टोरियल। नाउ लेट्स फाइंड आउट द 5 फैक्टोरियल। सो 5 फैक्टोरियल 5 factorial is equals to 120। So the different arrangement, so total number of arrangement will be equals to total number of arrangement will be equals to 120। Now this will be the final answer। Let's move on to the next question, next part। Now find a number of different arrangements of the 8 letters in the word deceived in which the 3 E's are not all together। Okay, not all together, this is an important point। एक और कीवर्ड अगेन आप देखें जैसे प्रीवियस पार्ट में था कि द वर्ड अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट का वर्ड जब भी होगा इसका मतलब ये है कि हमने फैक्टोरियल यूज करना है। सो व्हाट वी कैन डू, सबसे पहले तो हम अरेंजमेंट बना सकते हैं। वी कैन सी दैट 1 2 3 4 5 6 7 and 8। नाउ 3 E's आर नॉट टुगेदर, तो हम ये कर सकते हैं कि हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट में से E's टुगेदर वाले को माइनस कर देंगे। सो दिस विल बी, लेट्स सपोज E's टुगेदर मीन्स 3 E's आपके पास एक साथ हैं,
So इसकी पहले हम अरेंजमेंट निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स. नाउ दिस विल बी 1 2 3 4 5 6. So this will be equals to 6 फैक्टोरियल. अब इनके अरेंजमेंट कितना है आपके पास, नंबर ऑफ ways with 3 is together, 3 is are together. तो सबसे पहले हम ये फाइंड कर रहे हैं. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, नाउ कितनी स्पेसेस हैं, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. वाई 2 फैक्टोरियल? बिकॉज हमें ये पता है कि इन 6 स्पेसेस के लिए हमारे पास जो अवेलेबल हैं वो आपके पास, अगर इनको हम निकाल दें ईज को, 3 ईज को, सो आप देखें तो डी और डी रिपीट हो रहे हैं. सो 2 डीज हैं, रिपीटेड नंबर्स आपके पास, रिपीटेड लेटर्स आपके पास 2 हैं. सो दैट इज वाई दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, अब बॉक्स के लिए अलग से देखें. सो बॉक्स को अगर आप सेपरेटली ट्रीट करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3 स्पेसेस हैं और तीनों ही रिपीटेड लेटर्स हैं. सो दैट इज वाई दिस विल बी 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय द रिपीटेड नंबर ऑफ रिपीटेड लेटर्स का फैक्टोरियल. नाउ ये तो 1 के इक्वल आ रहा है. सो रिमेनिंग वन इज 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. तो ये डायरेक्टली हम फाइंड कर लेंगे. 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू 360. अब ये 360 जो है अरेंजमेंट है हमारे पास जब ईज टुगेदर है, एक साथ आ रहे हैं. और टोटल नंबर ऑफ वेज अगर हम देखें, टोटल नंबर ऑफ वेज, सो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा आपके पास, दैट विल बी 8 लेटर्स हैं. सो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ईज भी 3 दफ़ा है टोटल में, मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल बिकॉज डी आपके पास 2 दफ़ा आ रहा है. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल divided by 3 factorial multiply by 2 factorial. So the answer will be 3360. Okay, now we have to find the number of ways with is not 3 is not together. This will be equals to total माइनस जो टुगेदर आपके पास आ रहा था उसको माइनस कर दें. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3000. सो इसको रिकन्फर्म कर लेते हैं, माइनस 360, दिस विल बी इक्वल्स टू 3000. So it means that this 3000 will be the final answer. I hope that the concept is clear. Now let's move on to the next question. Okay. Now next question is that there are 6 men, 8 women in a book club. Now we can see here that from here we can see that total we have 14. Okay. Now the committee of the club consists of 5 of its members. Mr. Lan and Miss Lan are members of the club. In how many different ways can the committee be selected? Now as we can see the keyword here is selected. So इसका मतलब ये है कि we have to use the combination. Okay, if exactly one of Miss Lan and Mr. and Miss Lan must be on the committee.
Now these are the keywords. So the very important thing is that first of all we can see here the total we have 14. Out of 14, one selected means Mr. Lan cannot. If one is selected, then the remaining will be 12. ओके तो 14 में से हम कंडीशन इज कि आप इसमें से एक को मस्ट सेलेक्ट करना है, और अगर एक सेलेक्ट हो गया तो सेकंड सेलेक्ट नहीं हो सकता. तो इसका मतलब ये है कि रिमेनिंग हमारे पास 12 ऑप्शंस होंगे जिसमें से सेलेक्ट करना होगा. सो लेट्स सपोज कि हमने सेलेक्ट टोटल कितने करने हैं, 5 ऑफ इट्स मेंबर्स. सो 5 हमने सेलेक्ट करने हैं. सो 1 2 3 4 5. इन 5 में से अगर आपके पास एक स्पेस है फॉर मिस्टर लैन, या इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट हो सकता है. सो रिमेनिंग आपके पास 4 हैं. सो इन 4 के लिए वी कैन सी दैट इन 4 स्पेसिस के लिए अगर हम देखें तो इन 4 स्पेसिस के लिए व्हाट वी हैव टू डू कि हमारे पास एक तो हमने कम्बिनेशन को यूज़ करना है. सो वी हैव टू सेलेक्ट 4 आउट ऑफ 12. सो 12 में से 4 हमने इन 4 स्पेसिस के लिए सेलेक्ट करना है. एंड देन हमें ये पता है कि इस पे आपके पास, इस स्पेस पे आपके पास कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं. सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस. सो इट मीन्स दैट 12C4 multiply by 2. So the final answer will be 990. Okay, so we can see that this will be the final answer as per the condition. So we can say that 990 different ways can the committee be selected. Let's move on to the next one, but keep this thing in your mind कि आपके पास ये जो कंडीशन है वो स्टार्टिंग कंडीशन ये है. Now in how many different ways can the committee be selected? Again we can see the keyword here is selected. So it means we have to use the combination. The keyword here is selected, so we will use the word we will use the concept of combination. In how many different ways can the committee be selected? When if Mr. Len must be on the committee and there must be more women than men on the committee. There must be more women than the men. So इसका मतलब ये है कि ये हमें condition given है. So condition ये है कि पहली चीज़ तो ये है Mr. Len must be on the committee. So 1 2 3 4 and 5. So if he must be in the committee, so इसका मतलब है हमारे पास 4 spaces remaining है. So for remaining 4 spaces let's see the condition. अब एक condition हमें क्या given है कि there must be more women than the man on the committee. So इसका मतलब ये है कि conditions क्या हो सकती हैं, there must be more women. condition ये हो सकती हैं कि there must be more women than the man on the committee. So ये हो सकती हैं कि आपके पास 2 women और 2 मैन हो, या आपके पास 3 वुमेन और 1 मैन हो, या आपके पास 4 वुमेन और कोई भी मैन ना हो. तो ये कंडीशंस है आपके पास, और इसमें आपको ये पता है कि मैन कितने और वुमेन कितने, ये भी ज़रा डिसाइड कर लेते हैं. तो बिल्कुल स्टार्ट में हमने देखना होगा कि मैन कितने आपके पास. मैन है आपके पास 6 मैन और 8 वुमेन है. सो वुमेन 6 मैन और 8 वुमेन, 8 वुमेन है. सो एज वी कैन सी, ओके दिस वन इज मिस लैन
ऑलरेडी एक वुमेन है, तो ज़ाहिर है तभी हम फर्स्ट केस में 8 वुमेन, मतलब 5 की कमेटी में अगर आप देखें तो अब इस तरह 3 वुमेन यहाँ पे, इन सारे केसेस में, इन तीनों केसेस के अंदर नंबर ऑफ वुमेन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मैन, बिकॉज ये मिस, इसको भी आपने इंक्लूड करना है कमेटी के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप 2 वुमेन और 2 मैन सेलेक्ट कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपको पता है कि मिस लेना ऑलरेडी है, तो ये आपके पास, तो हमें टोटल वुमेन्स कितनी है जिनमें से सिलेक्ट करना है, दैट इज 7। 7 इसलिए बिकॉज एक ऑलरेडी सिलेक्टेड है, एंड देन मैन आपके पास 6 हैं। ओके, अब हम ये देखेंगे कि 2 वुमेन मीन्स 7C2, 7 में से हमने 2 सेलेक्ट करनी है, मल्टीप्लाई बाय 6C2। देन सेकेंड केस 7C3 मल्टीप्लाई बाय 6C1, and the last one 7C4 multiply by 6C0. now this will be equals to, अब हम इसको कैलकुलेटर पर फाइंड आउट करते हैं, 7C2 multiply by 6C2 plus 7C3 multiply by 6C1 plus 7, इसको हम सेपरेट भी कर सकते थे 7C, बल्कि हम सेपरेट ही करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, बिकॉज इस तरह आपकी, आई विल नॉट रिकमेंड कि आप एक ही स्टेप में सारे करें, बिकॉज इस तरीके से आपकी मिस्टेक आ सकती है। 7C2 मल्टीप्लाई बाय 6C, और आपने वर्किंग भी इसको शो करना होता है, सो दैट इज़ वाई आई विल रिकमेंड कि इसको स्टेप वाइज करें। देन द नेक्स्ट वन इज 7C3 multiply by 6C1, so this will be equals to 210, and then 7C4 multiply by 6C0, so this will be 35. सो इन तीनों को अगर आप ऐड करें, सो दिस विल बी प्लस 210 प्लस 315, so your final answer will be 560. So we can say that total number of ways is equals to 560. Now this will be the final answer. Let's move on to the next question. Question number 3. The time taken to travel college by 2,500 students are summarized in the table. Draw a histogram to represent this information. Okay, now histogram, for histogram we can see that we have to use the frequency density. So first of all we have to add one more column, that will be class width. So class width for the first interval will be 20, because class width means from 20 minus 0 is 20. So second one 10, then this will be 10. 60 minus 40 is 20, and then 90 minus 60 is 30. Now as we know that frequency density is equals to class width divided by frequency divided by the class width, frequency divided by the class width. So we will find out the frequency density for each interval. So for the first one, frequency is 440. So 440, so we will write it like this,
440 divided by frequency divided by class width. 440 divided by 20, this will be 22. I should not use the equal to sign. This will be 22. Now the next one is 720 divided by 10. So divided by 10, it will give us 72. Then the next one is 920 divided by 10, it will give us 92. Then 300 divided by 300 divided, it will give us 15. It will give us 15, I think, yes, 15. And then 120 divided by this, it will give us 4. Now we have to plot it on the graph like this: 22, 72, 94, 92, 15 and 4. Okay, now in frequency density, we have to use frequency density on y-axis, and the data here, the data is time, we will use it here. Now from 0 to 10, let's first level this one. So 20 and then 20 and then 40, then 60, then 80 and then 100. Similarly on y-axis, this will be 20, then 40, then 60, then 80, then 100. Now we will plot it like this. So 0 to 20, for 0 to 20, the frequency density is 22. So frequency density is 22 means we will use actually this portion is 22, so this one will be, yes it is. So for 0 to 20, the height will be 22, yes it is. Now the next one is for 20 to 30, it should be 72. It should be 72. So 72 means here this will be 70. So 72 means this row. So 20 to 30, 20 to 30, this will be 72. Now for the 30 to 40, this will be 92. So 92 will be somewhere here. This will be 92. 30 to 40, this will be 92. Okay, now for 30 to 40, and then for 40 to 60, this will be 15. 40 to 60, this will be 15. So 15 means this will lie somewhere here. This will be 10 and this will be 15. Okay, so this will be 15. So, and then for 60 to 90, this will be 4. So 4 means for 60 to 90, this will be 4. So this will lie 2 columns here. This will represent. Now that's it for histogram. So this will be the final answer. Next, move on to the next part. From the data, the estimate of the mean value of t is 31.4.
So it means that the mean value is 31.44. Calculate an estimate of standard deviation. Standard deviation of the time taken to travel to college. Now, as we know that standard deviation is equals to square root of the variance. Okay. Now, variance, the formula for the variance will be equals to variance of x will be equals to summation of x square f divided by n minus square of mean. Now here we can see that the variance of the data will be equals to now x square. What is x? Let's see the table. Now x here is that now first of all we have to find x. So x will be the mid value of each interval. So this will be for the first one, this will be 10, then 25, then 35, and then 40 and 60 divided by 2 is 30, 60 and 90 divided by 2 is 75. Now x square means, now we can use these values. So this will be summation means we have to add. So this will be equals to 10 square multiplied by corresponding value of f, that is 440, plus 25 square multiplied by 720, plus 35 square multiplied by 920, then plus 50 square multiplied by 300, then plus 75 square multiplied by 120, whole is divided by n. Now what is n? N is the, for this case, n will be summation of f. So summation of f, let's find out the summation of f means we have to add this column. So this will be equals to 440 plus 720 plus, by the way, for this case we have already 25 students, 2500 students. So this will be equals to 2500. So we can find it out like this will be 10 square multiplied by 440. This will be equals to 440 plus 25 square multiplied by 720. This will be 450 and then 3 zeros, plus the next one is 35 square multiplied by 920. This will be 1127 plus 50 square multiplied by 300. This will be 75000. Then 75 square multiplied by 120. This will be equals to 675 whole is divided by 2500 minus 31 स्क्वायर. ये अब मीन को भी हमने माइनस करना था. सो माइनस 31 स्क्वायर साथ चल रहा है. सो the final answer after doing the calculations, so variance will be equals to 229.9264
So standard deviation will be equals to 229.964. So the final answer will be standard deviation will be equals to 15.2. Now this will be the final answer. I hope that the concept is clear. Now in which class does the upper quartile lie? Now upper quartile means that 3 by 4 multiply by total frequency, total cumulative frequency is 2500. So this will be equals to 3 by 4 multiply by 2500. So this will be equals to 1875. Now let's look at the class where it lies. So this will be 1875 will be 1875 means, so let's calculate. First interval is 440 तक है, then plus 720 तक है. आंसर क्या आ रहा है 1160, नहीं नेक्स्ट पे भी जाते हैं, प्लस 920. ओके, सो इसका मतलब ये कि थर्ड इंटरवल में आ रहा है. सो 30 से लेके 40 तक जो है आपका आंसर. द क्लास विल बी, द फाइनल आंसर विल बी 30 less than and equals to t less than 40. So this will be the final answer. Now next, let's move on to the next question. Okay, it was later discovered that the time taken to travel college by two students were incorrectly recorded. One student's time was 15 instead of 5, and the other student's time was recorded as 65 instead of 75. Without doing any further calculation, state with the reason the estimate of the standard deviation in part B would be increased, decreased, or stay the same. Now as we can see that the formula for the variance, by the way we don't need this working, but just for the sake of understanding, the formula for the variance is this summation of f minus x bar whole square. Now we can see here that this mean will not be changed. Similarly, the total cumulative frequency will not be changed. It will not be changed. Okay, बिकॉज हमारा डेटा चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और मीन पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. सो इसका मतलब ये, बिकॉज मीन को अगर आप इंक्रीज़ करें, सो आपके पास 15.5 हो रहा है और 65 से ओरिजिनल आपके पास 5 और 75 थे, और अब आपके पास 15 और 65 है, तो मीन पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. ठीक है, सो यहाँ पे 10 का इंक्रीज और यहाँ पे 10 का डिक्रीज हो रहा है. दैट इज़ वाई वी आर सेइंग, यहाँ पे देखें 10 का, ये ओरिजिनल आपके पास ये था, इंस्टेड ऑफ 5 का मतलब ये ओरिजिनल 5 और 75 थे, और 10 का इंक्रीज है यहाँ पे, और यहाँ पे 10 का डिक्रीज है. सो आपके मीन पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, डजेंट चेंज. अब एक्स स्क्वायर एफ की बात आ गई. सो वी कैन से दैट so let's see the reason here, that it will stay same, because the data still remains in the same interval. So we will say that the standard deviation will not be changed. The data still remains in same interval, or we can say that frequency
frequency is unchanged. The second point you can write is that the frequency is unchanged, or frequencies are unchanged. So this will be the final answer with the reason, and the logic behind it is कि इस पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, मीन पे 10 का इंक्रीज़ और 10 का डिक्रीज़ हो रहा है ओवरऑल, तो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा. आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चंस. आज हमने मई जून 2022 के पेपर 5-1 का क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक किया है. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन. प्रीवियसली अगर आपने कोई लेसन मिस किया है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में इसका लिंक देख सकते हैं. थैंक यू.